तकलीफ है तो सबसे अच्छी चीज है यू फास्ट. And when you fast, your body definitely heals better because all the blood is going to that part where the healing is required. नहीं तो food digest करने में बहुत टाइम लगता है. Anyway, I'll keep that subject aside. So, physical healing में मदद करता है उपवास. लेकिन बस यह उपवास तो जो भी डाइट करने वाले लोग हैं वो तो करते ही रहते हैं, बहुत डाइट करते हैं, इतना ही खाना, इतना ही ये, ऐसे ही है. तो इससे क्या सोल एलिवेटिंग एक्सपीरियंस हो रहा है. आजकल तो इफ थोड़ा भी कोई मोटा है लेटस से एंड ऑल दैट तो उसको मोटा और ऐसे ऐसे बोल देते हैं कि दे फील बैड विच एक्चुअली इज नॉट गुड. इट इज बॉडी शेमिंग ना. तो मतलब कि वी आर बिकमिंग मोर अहंकारी, इगोइस्ट कि देखो मेरा बॉडी ऐसा है, तेरा बॉडी ऐसा है, मेरा कलर ऐसा है, तेरा कलर ऐसा है. अब हमारा क्या एफर्ट रहा हमारा कलर जो आया है इस बॉडी को. लेकिन हम बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं, ये ज्यादा हम सोच रहे हैं. तो ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाया जाता है कि आप सोल कॉन्शियस हो जाओ. उपवास करना है तो नेगेटिविटीज का उपवास करो. सबसे अच्छा उपवास कौन सा है पता है आजकल जो चाहिए वो है ये जो है ना इसका. चलो एक दिन तो छोड़ ही दो, थोड़े घंटे उपवास करो. जरूरी है नहीं है, जरूरी है ना. इसका जो यूसेज है ये उपवास करना है और हम करेंगे तो बच्चे करेंगे. देखो ये छोटू है, देखो ये इधर बैठा हुआ, देख लो देख लो. दिस इज आवर रिफ्लेक्शन, दिस इज नॉट ही. दिस एक्चुअली इज रिफ्लेक्टिंग हाउ वी एल्डर्स आर बिहेविंग. है ना, पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, सिस्टर मेरा बेटा ऐसे करता है, मेरी बेटी ऐसे करती है. what I say to them, be cautious of whatever you are saying because the child does not know anything from outside. सब कुछ घर में जो हो रहा है वह पिकअप कर रहा है या स्कूल में जो हो रहा है वो पिकअप कर रहा है. Every style of his is totally connected to his education and the parenting which is going on. Right, wrong? Right? तो अभी बड़ों को उपवास बहुत जरूरी है. ये सोशल मीडिया है ना, ये चीजों का उपवास करना बहुत जरूरी है. एंड हम इतना जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर देते हैं, देखते भी नहीं क्या आया है कर, वेदर दैट मटेरियल इज वर्थ और नॉट. तो अच्छा है शारीरिक उपवास भी करो. लेकिन जैसे नहीं ब्रह्मा कुमारी इसमें हमको क्या सिखाते हैं, चलो आज जो है ना आप गुस्से का उपवास करो. गुस्सा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी. अच्छा सामने वाला गुस्सा करे तो, सामने वाला गुस्सा कर रहा है बट ही हैजंट टेकन एन एम दैट मैं गुस्सा नहीं करूंगा ना. आपने लिया है ना. तो आप अपने एम में कैसे रहे उसके लिए पावर चाहिए. गुस्सा नहीं करना है कहना इजी है बट यू नीड पावर टू स्टे इन दैट स्टेट ऑफ माइंड. तो वो पावर कैसे मिलती है, वो पावर मिलती है जब हम परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, दैट इज वी डू मेडिटेशन. सो हमको एक दिन की शिवरात्रि नहीं मनानी है, रोज शिवरात्रि मनानी है, रोज कोई ना कोई नेगेटिविटी का उपवास करना है. एंड द सेकेंड थिंग इज जागरण, जन जागृति, है ना. you I all of us need to bring awareness in the society कि we are spiritual beings and God is our father. जब ये एक्सपीरियंस हम करते हैं कि गॉड इज माय फादर, then any negativity you are ready to overcome that. Because God is ocean of peace. So as his child I am also ocean of peace ना. दो बच्चे लड़ते हैं तो आप क्या कहते हैं, आप बड़ा बनो ना, आप नहीं लड़ो ना. तो यहाँ पर यह सिखाया जाता है फर्स्ट एनलाइनमेंट, फर्स्ट जागृति जो लानी है इस मेटीरियलिज्म में जितना हम फंसे हैं. एंड हम सोचते हैं मेटीरियलिज्म से सुख मिलेगा, पैसा है तो सुख मिलेगा. जिसके पास पैसा है ना उसको पूछो हालत क्या है कर, वो बेचारा बाहर बोल भी नहीं सकता है. हाँ, अंदर ही अंदर जो है ऐसी सारी बातों को रख लेता है.
क्योंकि हैप्पीनेस इज नॉट इन मनी, हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड एट ऑल, क्योंकि बाहर की चीजें आर ऑल टेम्पररी। अभी फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आजकल करोड़पति से रोडपति बनने में कितना टाइम लगेगा? शेयर मार्केट क्रैश, यहां गए काम से, है ना? सो हमको समझना है हैप्पीनेस इज अ एक्सपीरियंस फ्रॉम विद इन, और अंदर जब हम भरपूर होते हैं, व्हेन वी आर फुल इनसाइड, देन ऑटोमेटिकली विल बी हैप्पी। अब ये इनसाइड हम कैसे हैप्पी रहे, कैसे मेडिटेशन करें, कैसे भगवान से हम संबंध जोड़े, ये सारी यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में क्लासेस होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आज की दुनिया में फ्री चीज के ऊपर भी लोगों को डाउट आता है, कोई हिडन एजेंडा होगा शायद, क्यों हमको फ्री दे रहे हैं, कुछ तो होगा। नहीं, थोड़े दिन के बाद कुछ तो ये लोग डिमांड करेंगे। बट लास्ट 88 ईयर्स से, नहीं, इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम फ्रेम, लास्ट 88 ईयर्स से ये संस्था ऐसे ही चले आ रही है। वॉलंटरीली इफ एनीबडी कॉन्ट्रीब्यूट्स दैट्स फाइन। तो आप सबको मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आज आप शिवरात्रि में आए हो, टाइम दे रहे हो, आर यू, हम तो फ्री है कराने के लिए क्लासेस, आप फ्री है? आर यू फ्री टू टेक स्पिरिचुअल क्लासेस? फ्री है? हाथ उठाइए जो फ्री है। बोलेंगे नहीं, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा है, वैसा है, ऐसी सारी बातें हम करते हैं। वी हैव टू प्रायोरिटाइज। आज जिस समय से हम गुजर रहे हैं, इफ यू आर नॉट इंटरनली स्ट्रांग, इमोशनली स्टेबल, यू कैनॉट फेस ऑल द चैलेंजेस जो आजकल सामने आ रही है। इसलिए टाइम निकाल कर, जैसे फिजिकल फिटनेस इज इम्पॉर्टेंट, mental fitness is important. I would like to say, even in the in the field like sports, they are talking of something called mental health. 20 years back when we used to go to the sports, people to say, ये क्या है, white dress वाले हमको क्या सिखाएंगे? But now there is a growing realization that mentally we have to be fit. So आप अपने में ये awareness बढ़ाइए कि internally I have to become strong. And for that, we are always there to help you. You can always take our help. That is why we organize such festivals. To bring that awareness, जागृति लाने के लिए। तो आप सबको फिर से महिला दिवस की भी बधाई, और आज शिवरात्रि मना रहे हैं, और सदा शिवरात्रि मनाते रहे, सदा ही महिला दिवस मनाते रहे, सो दैट स्पेशली महिला दिवस मनाने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा कुछ हम सब मिलकर के करें, इस ही आशा के साथ ओम शांति। वो बहन आई है, उनको बिठा स्टेज। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर अंजलि। अभी हमारे बीच सिस्टर सृजना जी आ गए हैं। आप बिजनेस वुमेन हैं, आप एक इंडस्ट्री चलाते हैं जो जूट बैग्स बनाते हैं आप, तो इनका भी स्वागत है। और अभी आपने जो ये सुना, जो कि आत्मा का परिचय और जो वैल्यू एजुकेशन की जो बात, तो इसके विषय में 3 दिन का एक शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स होता है, मॉर्निंग 7 to 8 और इवनिंग 7 to 8, जो कि 10th 11th एंड 12th मार्च को रखा है। 10th 11th एंड 12th मार्च, मॉर्निंग 7 to 8, इवनिंग 7 to 8, जिसमें आपको सेल्फ का इंट्रोडक्शन होगा, सुप्रीम का इंट्रोडक्शन होगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी हमारे जो गेस्ट हैं उनका हम संक्षिप्त में ग्रीटिंग्स लेंगे। बहन का नाम सो फेलिसिटेशंस के पहले
जो हमारे बीच में आज विशेष चीफ गेस्ट के रूप में ऑनरेबल जस्टिस सूरपल्ली नंदा जी आए हैं, आपके विचार भी आप हमारे समक्ष रखिए on the occasion of Shivratri as well as Women's Day. Distinguished dignitaries on the dais, Sister Anjali Garu, all the other sisters on the dais, all the other sisters of the dais, all the brothers assembled here. I believe it's a divine blessing of God Almighty to be a part of this momentous occasion of Shivratri and Women's Day celebrations organized by the esteemed Brahma Kumari's organization. When my sister Vaijayanti came this morning with this request of being a chief guest for this function, I accepted it readily for two reasons. Firstly, because it was a request from my sister. And secondly, I have been observing the sister Brahma Kumari since a long time, though I attended only one event with Honorable Justice Ishwaraya Garu once. That was many years back, more than 10, 12 years back. But then whenever I observed them, I felt they are so calm, they are so peaceful. And it surprises me how a woman can be so calm, a woman can be so peaceful. And today I came to know a small secret that we should speak within ourselves and say that I'm a happy soul, I'm a peaceful soul. So I started doing it since morning itself, because I came to know only this morning. And so far as my message on the eve of Women's Day is concerned, a very good evening to you all, and a happy Shivratri, and a very happy International Women's Day. My heartfelt felicitations to all of you on the occasion of International Women's Day. International Women's Day is celebrated world over to commemorate the struggle of women to participate in society and polity on an equal footing with men, to raise public awareness of the rights of women, and endeavor to replace a patriarchal society with a more egalitarian society. Women, I believe, are the power and spirit of our nation. Nation is always empowered by its women. It is she who nurtures as a citizen, as a mother, as a sister, and later in the life as a wife. These empowered citizens eventually make an empowered country. But fact remains, women, however, have always been considered as the weaker sections of the society, as the victims. India's efforts to be freed from the shackles of an exploitative colonial rule began long ago, and 1857 was one of its early manifestations. Even in the middle of the 19th century, while there were only men on the other side, the Indian side included many women. Rani Lakshmibai was the most notable among them, but there were many more like her, fighting bravely against the unjust rule. That period was marked by countless uprisings across the country against foreign rule. They were of local nature, but they were also animated by nationalist aspirations. Equally, they all were marked by women's wholehearted participation in them. It was towards the end of the 19th century that the freedom struggle started taking a distinct and formal shape. Gandhiji's return to the motherland in 1915 transformed it into a mass movement. A number of satyagraha campaigns led by him, from the non-cooperation movement to Quit India, had widespread participation of women. Indeed, historians have noted that women from all sections of society came out of their limited domestic spaces and joined public agitations in large numbers, thanks to Gandhiji's unique leadership.
I would like to add that those agitations were so successful eventually, precisely because there was women's participation in them. Among the first women satyagrahis was Kasturba Gandhi. Given the larger than life personality of her life partner, her own contribution to the nation tends to be ignored. She was not only the better half of the father of the nation, she was an inspiration to many women right from her days in South Africa. Also consider the Salt March to Dandi, the great event that changed the course of history. When Gandhiji was arrested, he chose to pass the mantle of leadership of this campaign to Sarojini Naidu, a great orator and poet. Naidu led by example and gladly faced a jail sentence. When one starts giving examples of women's participation in a national movement, so many inspiring names come to mind that one is able to mention only a few of them. Before this August gathering, I would like to recall the heroic sacrifices of Madam Bikaji Kama and of Captain Lakshmi Sehgal and her associates in the Indian National Army led by Netaji Subhash Chandra Bose. This sensitivity towards equality of all kinds could only have been achieved due to the freedom struggle. India accomplished a rare distinction of offering universal franchise to all its adult citizens, regardless of any distinctions, right at the inception. Women not only voted in elections, but even contested, and 24 of them were elected to the first Lok Sabha in 1952. They included great freedom fighters like Sucheta Kriplani, also considered the pace and momentum of women's empowerment. Barely a decade later, in 1963, she became the Chief Minister of Uttar Pradesh, then India's largest state that was larger than most nations. Women in the world's oldest modern democracy, the United States, had to wait for more than a century after its independence to win the right to vote. Their sisters in the United Kingdom also waited nearly as long. Even after that, many economically advanced nations of Europe refrained from granting voting rights to women. In India, however, there was never a time when men could vote, but women could not. This, to my mind, shows two things. Firstly, the framers of the Constitution had deep faith in democracy and in the wisdom of the masses. They considered every citizen as a citizen and not as a woman or a member of a caste or tribe, and held that each of them must have an equal say in shaping our common destiny. Secondly, from ancient times, this land has seen woman and man as equal, indeed, as incomplete without each other. I know of no other civilization that perceives God as Ardhnar Narishwar, half male and half female. As Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations, put it, gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenges of reducing poverty, promoting sustainable development, and building good governance. To place the event in historical perspective, International Women's Day emerged from the labor movements in the garment industry in New York, as women were being paid low wages and experiencing sexual harassment. These workers went on strike for more than a year. Historically, the first National Women's Day was observed on 28th February 1909 as an initiative of the Socialist Party of America. It was more a political event as a result of the revolution against inequality and oppression. International Women's Day was first observed on 19th March 1911 in Germany, Denmark, Austria, and Switzerland, where more than 1 million men and women attended rallies. It took a revolutionary turn in Russia during the First World War in 1917. Russia was facing unrest on account of widespread food shortages, which led to daily mass strikes of workers from all sectors, demanding bread, better rights, and an end to autocracy. Women called a strike for bread and peace on the last Sunday of February, which, according to the Gregorian calendar, fell on the 8th of March. That is how International Women's Day is celebrated on this day. As a consequence of this movement, Russia became the first country to extend voting rights to women in 1917. This was extended to the United Kingdom in 1980, to the US in 1920. In 1975, the United Nations designated March 8th as International Women's Day, which is commemorated globally
In recognition of the right of women to be treated with equality, member states were invited to proclaim March 8th as the day for women's rights and world peace. In India, the struggle in the legal profession commenced with Cornelia Sorabji, who was India's first woman lawyer. After becoming the first woman to obtain a graduate degree in law from Bombay University in 1888, she wrote to the National Indian Association for financial assistance in completing her education. Despite standing first in the university examinations at the Deccan College, Sarabji was not eligible for the Government of India scholarship to study in England simply because she was a woman. Sarabji arrived in England in 1889 and was not allowed to read in Lincoln's library. She received educational funds through private sources like her British friends, the Hobhouses, Florence Nightingale, Sir William Wedderburn, and others. She studied for a law degree at Somerville College, Oxford in 1889 and was the first Indian national to study at the British University. Yet she faced the hardest time to take the examination to become a barrister. In fact, in 1892, she had to get special permission by a congressional decree to take the Bachelor of Civil Law exam at Somerville College, Oxford. In 1897, she was the first woman to pass the LLB examination from Bombay University. In 1899, she took the pleader's examination of Allahabad High Court and was called to the bar only in 1923 when the law barred women from practicing was amended. Sorabji lived during colonial times and yet was able to transcend the Victorian mindset. She espoused the cause of women, particularly that of Parda Nashin, women whose religion and cultural beliefs prevented them from speaking to men outside their family. She championed the cause of opening up the legal profession to women much before they were formally allowed to plead before the courts of law. She worked for many years as a legal advisor to women and children on matters in provincial courts. Without her commitment, sacrifices, and struggle, it would not have been possible for any advocates to even stand at the bar. Women are no longer seen as mere recipients of welfare benefits, but are recognized as holders of equal rights, equal partners, and agents of change in the social, economic, cultural, and political processes of the country. In the political arena, women have made great strides, contributing effectively to lowering of social and economic inequalities and selflessly working for the goals of development and nation building. In the realm of local self-governance, more than 1 million women in rural India, far beyond the stipulated 33%, have efficiently taken up positions of authority and are discharging their responsibilities efficiently and with commendable outcomes. In challenging domains like the defense, services, police, security forces, judiciary, in sports, academics, space research, and innovation, in taking up the cause of the vulnerable and the exploited, in community outreach and mass healthcare initiatives, women are indispensable for good teamwork and success. It is often not easy, we must admit, that they are frequently subjected to unfolded and unfounded biases and discrimination. Yet the fact that they are able to overcome these and inspire esteem and respect is commendable indeed. Women are shattering the glass ceiling in one domain after another. The latest is their enhanced role in the armed forces. Their numbers are rising in the traditional male bastions of science, technology, engineering, mathematics, and management, collectively known as STEM. There must have been more women than men among the Corona warriors who guarded the nation during those months of the crisis. Such achievement should have been natural for women who constitute about half of the population. That unfortunately has not been the case. We have to admit that they have suffered from deep-rooted social prejudices. Their proportion in the workforce is nowhere near their potential. In politics, too, there should be far more of women contesting and also winning elections. This sad state of affairs is, of course, a worldwide phenomenon. India has had at least one woman prime minister, and there have been two women presidents of India, when several nations are yet to have their first female head of state or government.
A mother's impact on shaping the future of humanity is immense. A mother has been endowed with a special gift from nature to give unconditional love to her children and family and to bind the family together. Therefore, the saying that God created mother because he could not be present everywhere. Many of the values and approaches in life are learned by children from their mother. A woman's role extends from being an important member of the family, daughter, sister, wife, and mother, to being a determinant of social development, as well as an architect of and contributor to building the nation. As love and kindness are the essential qualities of motherhood, women contribute to the development of a good family, a compassionate society, a progressive nation, and a more tolerant world. Women's participation in the political and economic activities of a society enrich the fabric of a nation. Many women in India have reached high positions, and many others are doing well in different spheres and even in professions once unthinkable for women. I am, however, conscious about the constraints and difficulties that they are facing in realizing their full potential. Our efforts to empower women through education, awareness, and opportunities must continue. Women can play an important role in focusing on issues related to gender inequality, ways to eliminate poverty, and social practices that are disadvantageous to the development and empowerment of women and the girl child. Women's empowerment is an important field where more work needs to be done. Of late, the incidence of crimes against women has gone up, and the role of the journalist, particularly women journalists, has become quite crucial in such cases. Nobody can understand a woman's problem better than another woman, and therefore the role of women journalists becomes all the more critical. Womankind, known for its innate humanness, sympathy, and compassion, is best suited to tackle all problems, particularly when there is so much emphasis on reformative approaches rather than retributive one. Women's empowerment is the only way to ensure peace, social inclusion, and prosperity in the world. India has always been at the forefront of promoting gender respect and democracy in society. Our history is full of examples of women taking up leadership roles. In fact, the Indian scriptures have laid great stress on respect from women. I quote here one such example, which says, Yatra naryastu pujante ramante tatra devata, meaning wherever women are given due respect, even the gods like to live there. There is no doubt that women have a tremendous capacity for multitasking, from their families and homes to farms and fields, and in their businesses and professions. Women are second to none in applying themselves with a commitment that comes from the heart and soul. I recall reading a remark in the masterpiece Gaire Bare of poet and Nobel laureate Rabindranath Tagore, which I would like to share. We women are not only the deities of the household fire, but the flame of the soul itself. Let us keep these words in our minds and hearts as we accord women the respect and deference that is their due. It should not be too difficult, as these basic values are a part of a grand heritage and deeply ingrained in our consciousness. Let us rededicate ourselves to revive, uphold, and propagate these basic values. I thank the organizers for giving me this blessed opportunity, in particular Sister Anjali Garu and her team, and Sister Vaijayanti. Thank you one and all. बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर जस्टिस नंदा जी का। आपने अपने खूबसूरत विचार दिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अभी सिस्टर महालक्ष्मी जी कॉरपोरेटर है हिमायतनगर के, वो अपने विचार देंगे और फिर उसके बाद एक डांस होगा, कृष्णा डांस फ्रॉम नृत्यांजलि डांस एकेडमी से। फिर उसके बाद सभी का फेलिसिटेशन होगा। ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన జడ్జి గారు నందా గారికి మరియు స్టేజ్ మీద ఉన్న మిగిలిన సిస్టర్స్ అందరికి కూడా నమస్కారం. ఇలాంటి పర్టికులర్ కార్యక్రమంలో, ఇంత మంచి కార్యక్రమంలో నేను పార్టిసిపేట్ చేయడానికి నన్ను పిలిచిన అంజలి సిస్టర్కి మరియు అరుణ్ అన్నకి అందరికి కూడా నమస్కారం. నా పేరు మహాలక్ష్మి రామన్ గౌడ్ అండి, హిమాయత్ నగర్ కార్పొరేటర్.
హిందీ కంటిన్యూ చేయాలా, తెలుగు అర్థమవుతుందా? ఎందుకంటే మేడం అంజలి సిస్టర్ హిందీ మాట్లాడేశారు, మేడం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడారు. సో తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, మనం ఈరోజు శివరాత్రి సందర్భంగా ఇలాంటి పర్వదినంలో 108 శివలింగాలను మన చుట్టూ ఉంచి ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమంలో మనందరినీ భాగస్థులు చేసిన అంజలి సిస్టర్కి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. సిస్టర్, మీరు ఏదైతే ఈ సంస్థ నడిపిస్తున్నారో, ఈ సంస్థకి ప్రేరణగా ఉన్న గురువు గారు కానీ, మొత్తం ఈ సంస్థని 5,000 సంస్థలుగా విస్తృతంగా ఏర్పాటు చేసిన మీ సభ్యులందరికీ కూడా ఈరోజు శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు. మరియు ఇక్కడ వచ్చిన అతిథులందరికీ కూడా, ఈ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు, దాంతోపాటు ఉమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు. ఈ రోజు పర్టికులర్ గా ఉమెన్ కి అధికారం ఇవ్వాలి, లేకపోతే ఆమెని పైకి తీసుకురావాలి అన్న మాట ఏం లేదు. మన దేశంలో భారతదేశ సంస్కృతిలో మన దేవుళ్ళు ఉన్న సమయం నుంచి కూడా ప్రతి స్త్రీకి కూడా ఎప్పుడూ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూనే ఉన్నారు. శివ భగవాన్ అర్ధనారీశ్వరుడు, అంటే ఆయన భాగంలో, ఆయన శరీరంలోనే సగం భాగం ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగింది. ప్లస్ ఆయన మొత్తం ఎటువంటి దుష్టుల్ని శిక్షించాలన్నా, శిష్యుల్ని రక్షించాలన్నా రక్షించే బాధ్యత దుర్గా అమ్మవారికి ఇచ్చారు. అంటే ఆ రూపకంగా స్త్రీకి మొత్తం గౌరవం ఆయన ఇచ్చినట్టే. నెక్స్ట్ మన విష్ణుమూర్తి, ఆయన ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీనే మొత్తం లక్ష్మీదేవికి ఇవ్వడం జరిగింది. సో లక్ష్మీదేవిని ఆవిడ వాళ్ళనే మొత్తం డబ్బు, ధనం అన్ని కూడా ఆవిడ అండర్లోనే జరుగుతాయి. అలాగే ఇంట్లో కూడా స్త్రీకి మొత్తం అన్ని ఎంత సంపాదించి తీసుకొచ్చినా భార్య చేతిలో పెడతారు, ఆవిడే మొత్తం ఇంటిని నడిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ మన బ్రహ్మదేవుడు గారు, ఆయన పక్కనే సరస్వతీదేవి గారికి ఇచ్చి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ కూడా ఆవిడకి ఇవ్వడం జరిగింది. సో అలా ఏ రోజు కూడా స్త్రీకి కొంతకాలంగా ఏవో జరిగిన విషయాలను మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే, కానీ దేవుడు ఎప్పుడైతే మనల్ని మొత్తం అన్ని ఒక మార్గంలో నడవండి అని చెప్పడం జరిగిందో, దానిలో అన్ని వేళల్లో కూడా ఆవిడకి తగిన ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. కొంతమంది పురుషులు అహంకారంతోనో కొన్ని విధాలుగా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టిన సందర్భాలు ఉన్నాయేమో కానీ, పాతకాలం నుంచి చూసుకున్నా మనం ఎక్కడ చూసినా సరే స్త్రీకి మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దేవుళ్ళ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే ఈరోజు పర్టికులర్గా విదేశీ సంస్కృతిలో స్త్రీకంటూ ఒక రోజు ఉమెన్స్ డే అన్నది సెలబ్రేషన్ ఉంది. కానీ నిత్యం స్త్రీ ఇంట్లో ఫస్ట్ నిద్ర లేస్తేనే ఆ ఇంటికి ఫస్ట్ వెలుగు స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆ ఇంట్లో వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఆ విధంగా స్త్రీ ఎప్పుడూ కూడా తన పాట ఎప్పుడూ పూర్తి చేస్తూనే ఉంది. ప్లస్ ఆవిడ లేనిదే ఇల్లు నడవదు, ఆవిడ లేనిదే ఏది జరగదు. సో అన్ని విధాలుగా స్త్రీని గౌరవిస్తూ ఉన్నాము. ఇక మన పిల్లలకి కూడా మనం సొసైటీలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న విషయాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటే, జనరేషన్ ఏదైతే ఫోన్స్ ద్వారా కానీ, లేదా ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఫాస్ట్ జనరేషన్లో పేరెంట్స్ ఇద్దరు కూడా బయట ఉద్యోగపరంగా కానీ వేటి పరంగా బయటికి వెళ్ళడం వల్ల పిల్లల మీద, మగపిల్లల మీద పర్టికులర్గా కంట్రోల్ తప్పింది. సో వాళ్ళని మనం స్త్రీని గౌరవించాలని చెప్పి వాళ్ళకి కొంచెం మనం ఇంట్లో తల్లిదండ్రులుగా మనం వాళ్ళకి నేర్పిస్తే దానివల్ల మంచి సొసైటీ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఈరోజు నేను ఏదైతే ఈ సంస్థతోనే అటాచ్మెంట్ నాకు ఒక 3 సంవత్సరాల కింద నుంచి ఏర్పడింది. అంజలి సిస్టర్ అప్పటి నుంచి అన్ని వేళల్లో కూడా ఎప్పుడూ కూడా పీస్ హౌస్కి నన్ను పిలుస్తూ ఉన్నారు. పీస్ హౌస్ నుంచి అరుణ్ బాయ్ ఎవ్రీ గురువారం నాడు మధ్యాహ్నం కల్లా నాకు ప్రసాదం అందిస్తారు. ఆ రోజు నేను ప్రతిసారి అనుకుంటా, ఇది నాకు శివుడు ఇస్తున్న ఆశీర్వాదం. పీస్ హౌస్ నుంచి నాకు శివుడు పర్టికులర్గా నా ఇంటికి ప్రసాదం పంపిస్తున్న, ఆఫీస్కి నా ప్రసాదం వస్తుంది అంటే ఆయన నాకేదో మంచి అవకాశం ఇవ్వబోతున్నారు పీస్ హౌస్ ద్వారా నేను ముందరికి వెళ్ళడానికి. సో ఆ అవకాశాన్ని నేను ఎప్పుడు వినియోగించాలని కోరుకుంటున్నా. ఈ పీస్ హౌస్ ఇలాగే అన్ని వేళలా విస్తృతి చెందుతూ, ప్లస్ అందరికీ కూడా ఇలాంటి మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్న పీస్ హౌస్ చాలా పవర్ఫుల్గా రన్ అవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాము. మనుషులకి మెటీరియల్ నాలెడ్జ్ని తగ్గించి పరమాత్మతో ఏకం చేసే ఈ యొక్క పీస్ హౌస్ పర్ఫెక్ట్గా మన అంజలి సిస్టర్ లాంటి వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో బాగా నడవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. बहुत बहुत धन्यवाद महालक्ष्मी जी का। अभी हमारे बीच कृष्णा डांस होगा। नृत्यांजलि डांस एकेडमी अमीरपेट से स्टूडेंट्स आए हैं। हम तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे जब ये स्टार्ट करेंगे।
यू फील लाइक हमारी फैमिली के ही बच्चे हैं। जनार्दना कृष्ण राधिकापते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना। जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना। गरुड़ वाहन कृष्ण गोपिकापते नमो कृष्ण नीरजेक्षणा। जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना। वरगुण कृष्ण वैष्णवाकृते सुरुचिरा कृष्ण शौर्यवारिदे मुरहरा विभो कृष्ण मुक्तिदायका। विमल कृष्ण वल्लभी कमललोचना कृष्ण काम्यदायका। जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना। तव पदाब्जं कृष्ण शरणमाश्रये भुवननायका कृष्ण पावनाकृते गुणगणोज्ज्वला कृष्ण नलिनलोचन। प्रणयवारिधे कृष्ण गुणगणाकर कृष्ण दीनवत्सला। जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना। कृष्ण द्वारका स्थिता पावनात्मका कृष्ण देहि मङ्गलम्। त्वत्पदाम्बुजं कृष्ण श्यामकोमलम् भक्तवत्सला कृष्ण काम्यदायक। कृष्ण श्रीहरि नमो। जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना। नमो कृष्ण नीरजेक्षणा। जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जन विमोचना जन्म मोचना। गरुड़ वाहन कृष्ण गोपिका
कृष्ण नीरजीक्षण जय जनार्दना कृष्ण राधे बहुत 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 धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का। हम जोरदार तालियों से इनका मोटिवेट कर सकते हैं इनको। और सभी को अभी सभी स्टूडेंट्स आए, हम उनको गिफ्ट देंगे, गॉडली गिफ्ट। ये जो कृष्णा है, ये शी इज ओनली 4 years old। जोरदार तालियां हम बजा सकते हैं। अभी हम फेलिसिटेशन करेंगे। जस्टिस नंदा जी का अभी हम फेलिसिटेशन कर रहे हैं। Om Shanti. Sisters Surapalli Nandaji, Honorable Justice, High Court of Telangana. Just now I have got to know that how hardworking she is. She being a senior advocate, she used to handle the cases of both Andhra and Telangana. Being in one place and going to 2 states and handling the cases it shows her passionate and dedication towards her work. Being a woman, balancing the family life and the professional life shows her commitment and sincerity towards her life and the service of country. You all, you can see all the stage guests as a woman balancing all professional lives and family life is a great uh, thing to learn to us. अभी हम सिस्टर महालक्ष्मी जी, कॉर्पोरेटर ऑफ हिमायत नगर, उनका फेलिसिटेशन कर रहे हैं। Sister Mahalakshmi. Sister Mahalakshmi is very simple and ground to earth. Being an coordinator, she always and tries to attend the programs of all Brahma Kumaris. She always, when have seen her, she is always smiling in her face, which brings a connectivity among the people around her. This shows her bless and connectivity with all the people around her. I really congratulate and Sister Mahalakshmi ji. अभी हम डॉक्टर नागा प्रपूर्णा जी का फेलिसिटेशन कर रहे हैं। Sister Naga Prapurna ji, she by profession is an associate professor in the Department of Chemical Engineering in CBIT College. She has an experience of 26 years in teaching field and being
and she is also a senior of Sister Anjali ji. She is very hardworking and simple. We know the teacher is next to mother. She teachers creates the bright life of the citizens. So I will congratulate and thankful to Sister Naga Prapunna ji. Although time is short, one word, two words from you. Thank you, Anjali. Sabhi ko namaskar. I'm a professor by profession, but also a mother, sister, friend, and guide to all my students. What I am today is because of my parents. My mother wouldn't be much educated, but उन दिनों में भी वो बोलती थी कि आपको अपने पैरों पर खड़े रहना है और आप जैसे बहुत सारे लोगों को आपको तैयार करना है. So I left my scientist job and then came for teaching. In these 6 years, I must have catered to more than 2,000 students who come in their teenage. They'll be 18 when they come to me and they leave around 21, 22. उस उम्र में तो बच्चे मम्मी की नहीं सुनते तो मेरा कैसे सुनेंगे? This is how I entered into this field. But yes, kids are wonderful. They are also supported by their parents at home. And we teachers try our best to guide them towards their future. God gave me this immense, beautiful opportunity to stand in front of you here. So, 3 things from my side: trust, blessings, miracle. Miracle, my daughter, also engineer here, who is supporting me today. I told her today is a holiday. सभी मंदिर बहुत रश रहेंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हम घर पे ही बैठेंगे. But look at the miracle, God. He brought me here and told me, आपको तो यहाँ रहना है. मैं हूँ आपके साथ. आइए. That's the miracle. Blessings, yes. Every day we fall. बच्चे गिर जाते हैं, चोट पहुंचती है, लेकिन वो बाद में ठीक हो जाते. इसका मतलब यही नहीं कि जिंदगी में कभी गिरते ही नहीं. बहुत बड़े बड़े उनको प्रॉब्लम्स हो जाती है, लेकिन हर बार they get up and again start walking. That is life. We have pain, we have sorrow, we have insult, but for every time, is it a man or a woman, a child or an elder, always look at God, pray to Him, ask Him to give the strength to walk on those thorns. Never fear. हाँ, मुश्किल होती है, लेकिन अगर उनकी कृपा हम पर है, ब्लेसिंग है, तो हम चल पाते हैं. इसी तरह मैं यहाँ की आके खड़ी हूँ. I had 7 fractures in my life, and I'm still walking. उनकी कृपा इतनी miraculous है. And trust, every day I look at Him. I tell Him, आज कुछ अनहोनी हो गई, किसी ने मुझे बुरा भला कह दिया, तो भी ना आप मेरे साथ रहो कि मैं समझ पाऊं कि ऐसा क्यों हुआ है. And I shouldn't give that pain to anybody. मेरे से भी हो जाती है. We are human, isn't it? तो then I go and tell God कि ऐसे बच्चों पर मैं आज चिल्ला दी, क्षमा कर दो. अगले दिन the same child comes and smiles at me, and I feel okay, He has given me the opportunity to continue. So thank you, Anjali Ben, my junior from college. We have been together, and such a wonderful person. After 35 years, we are still together, and her positive energy is being sent to me to continue spreading for many more who come across me. Thank you. Thank you, Anjali Ben. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Naga Prapurna ji. And it was actually you who initiated my felicitation program. She sent me a happy Women's Day greeting, and then it started. Why shouldn't I do a felicitation program? And so it's a wonderful event. It has taken place. Thank you once again. Next. अभी डॉक्टर अंजलि, आप एनेस्थीशियोलॉजिस्ट है सीसी श्रॉफ हॉस्पिटल में, उनका फेलिसिटेशन हम कर रहे हैं. Dr. Anjali ji, she is a senior anesthesiologist in Physician of Hospital. Is
and has a 35 years of experience in the medical field. She conducts many diabetic camps. She is very generous person by nature and charitable woman as a member of Arvind Foundation of Blind and Disabled Charity and in Angiras Foundation. She has a great passion towards meditation and follows Brahma Kumaris from last 7 years and attended medical conference in Mount Abu. She दो daily मिनट में अपना practices this meditation. दो शब्द। आज के वुमेन्स डे के उपलक्ष्य पे मुझे यही कहना है कि मेरी जिंदगी ब्रह्म कुमारी में आके बदल गई। वैसे तो मदद करना, चैरिटी करना ये सब आसान है, पर खुद में शांति खोजना और हर तरीके से खुश रहना, ये मुझे राज योगा मेडिटेशन ने ही सिखाया है। उनका मैं अंजलि बहन जी और सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और वुमेन्स डे से ज्यादा मैं राग योगा मेडिटेशन का प्रचार करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी समझती हूँ। थैंक यू। अभी सिस्टर अकिता मल्होत्रा जी। Sister Akita Malokraji, I welcome you, ma'am. She's a founder of Kamakshi Wedding as an event organizers and wedding planning, which is a subgroup of Namdari events, one of the biggest event business with the experience of 40 years. She initially worked in Namdari events and eventually established her own event venture Kamakshi. She follows in a great motto like she believes that saying yes to all challenges propels her forward with a great determination. I would like to say in Brahma Kumaris also the founder father says, Ha ji ka part. Ha ji is makes us learn many things. Thank you, ma'am. मैं आज यही बोलना चाहूँगी, शिव शक्ति एक है और बिना हस्बैंड एंड फैमिली के सपोर्ट के no woman can take this or come so far actually. So I would really thank Brahm Kumaris and Anjali Bhan to give me this opportunity and honor me today. Thank you so much. थैंक यू। अभी सिस्टर सृजना जी। I would like to welcome Sister Srujana ji. When I got to know about the Sister Srujana Garu, I was little impressed towards her passion in business. She started a business with a small unit by name Savi Creations with a 2 women employees and now 18 women switching in the field of switching and 12 women working from last 5 years. She participated in several exhibitions and in different places across the country with a great motto and intention to protect our environment from the use of harmful plastic bags. She produces eco-friendly bags and very sustainable bags. Thank you, ma'am. सृजना की जी के साथ I came in touch when I wanted to make some gifts, compliments, because we were doing our 25 years celebration. And then that is how I met her. And then I saw her hard work, her passion. She does all with jute and all that. And she's giving employment to around 20 of them, I think, no? 18 of them. And very honest and very hardworking. Timely, the product will come to you. And so I recommend her, if you have to do any products also, I think we should encourage, sisters like Sirjana ji. And thank you for this. It's a great thing for me, like, sharing a stage with very great people, because I'm really nervous and I couldn't able to talk. Thank you so much, Anjali Di. Thank you so much. A very nice unit she's learning, I'll tell about you. And really with some employees, very nice compliments she is making. And they were all appreciated. We made some jute bags from her. I know everybody says, sister, ये कहाँ से बनवाए हैं करके. And thank you for that. अभी सिस्टर रजनी जी, जो हम इतने जो खूबसूरत डांस अभी देखे थे, ये आप ही के स्टूडेंट्स हैं।
I welcome Sister Rajini ji. She is an international artist. She did MA in Kuchibudi and MCom gold medalist. She is well versed with the Simha Nandini style of dance and also proficient in various styles of folk dances and like Rajasthani. She is a recipient of various awards like Natya, Nitya Vidyavardhini and Nitya Visharadha. Recently, she got Doordarshan Grade Artist category award, and she performed on many national and international platforms, including Tirupati, Yadagiri, etc. I really thank you, ma'am. And she is a teacher of about 1,000 students now. Thank you, ma'am. Good evening, everybody. And really, it's a blessed for me to perform and to present in the august presence of everybody. And only one thing is, age is not a barrier. You can do anything and everything after age of 60 also, if you have willpower. Only you have to pursue with willpower and hard work. Thank you. आज इस शिवरात्रि के अवसर पर अंजलि सिस्टर अपने सबके लिए जो इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे और अपने सबको साथ में मिला के एक वंडरफुल इवनिंग बनाए उन्होंने, तो हम सब लोगों के तरफ से अंजलि बहन को एक बार फेलिसिटेट करने का मौका लेना चाह रहे हैं हम लोग. प्लीज क्लैप्स. ओके प्लीज. अभी सारे गेस्ट हमारी दीदियों का फेलिसिटेशन करने के लिए आए हैं. जोरदार तालियों से हम इनका उत्साह बढ़ा सकते हैं. सिस्टर अंजलि जो कि इंचार्ज है हिमायतनगर सेंटर के, जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, सेटअप किया है, प्लान किया है. अभी सुजाता बहन जो कि सहयोगी है सिस्टर अंजलि के, पीस हाउस हिमायतनगर ब्रांच के, आप भी 40 सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कि थोड़ा बैक हैंड पे रहते हैं और काफ़ी ऑलमोस्ट ऑल 20 आवर्स सेवाएं करते हैं आप. Sister Prashanti ji, she's in charge of Kachiguda Center. We know about her. She is very kind and very helping nature. The one of our head in charge, she is always with her. We were very thankful for her. आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद. आप लोग पेशेंटली बैठे. कहते हैं कि वक्त का खास होना ज़रूरी नहीं है, खास लोगों के पास वक्त होना ज़रूरी है. तो हमारे स्टेज पे जो भी खास सिस्टर्स हैं और सामने जो भी बैठे हैं सभी खास है. तो आप सबका धन्यवाद. आप यहाँ पे आए, बैठे. अभी हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे, उसके बाद हम ओम शांति. शिव का
ध्यान धरे आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरे। हर पल उसका ही ध्यान रहे, नश्वर तन का ना भान रहे। इस संगम युग में हम सबको बस सत्य धर्म का ज्ञान रहे। ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ पीले अमृत का प्याला। आओ शिव का ध्यान धरे। सुख शांति जगत में छाएगी, भरपूर खुशी मुस्काएगी। ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, एक ऐसी घड़ी अब आएगी। लो ज्योति बिंदु का फैल रहा, कहूँ और दिव्य उजियाला। आओ शिव का। Om Shanti. Once again, we thank to all the divine sisters. I repeat, day after tomorrow, 10th, 11th and 12th, जो राजयोग शिविर, राजयोग मेडिटेशन का जो शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स है, वो डे आफ्टर टुमारो 10th, 11th एंड 12th मॉर्निंग 7 to 8 एंड इवनिंग 7 to 8 होगा। पीस हाउस जो कि बिहाइंड टैंजा है, आपको मिल जाएगा एग्जिट के पास, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी एक और डांस नृत्यांजलि डांस एकेडमी से शिव पार्वती, उसके बाद एक और डांस रहेगा हंसिका, कुमारी हंसिका। इसके बाद कुमारी हंसिका का भी डांस रहेगा। शिव पार्वती का अभी डांस होने वाला है। क्यों?
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्करागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्करागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दारमुख्यबहुपुष्पसुपूजिता तस्मै नमः महिताय नमः शिवाय शिवाय गौरनाब्जवृन्द भूयाप्यताख्य श्रीनीलकण्ठाय वृषभजाय तस्मै शिवाय नमः शिवाय वसिष्ठपुंभोद्भवगौतमाय मुनीन्द्रदेवाचितशेखराय चन्द्राटवैश्वरमोचनाय तस्मै नमः शिवाय यक्ष स्वरूप दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यम् यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह बोधते थैंक यू सो मच नृत्यांजलि डांस एकेडमी के ये स्टूडेंट्स के लिए। अभी हमारे बीच कुमारी हंसिका आ रहे हैं, प्लीज वेलकम। Please play the song.
जटाटवीगल जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां कलेवलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिका ढमट्ढमट्ढमट्ढमट्टिनादमट्टमट्वयम् ढमड्ढमड्ढमड्ढमड्ढमड्ढमद्वयम् चकारचण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् కొలువై యున్నడే కొలువై యున్నడే దేవదేవుడు కొలువై యున్నడే దేవదేవుడు కొలువై యున్నడే దేవదేవుడు దేవదేవుడు కొలువై యున్నడే కొలువైయున్నాడే కోటి సూర్య ప్రకాశుడు కొలువైయున్నాడే కోటి సూర్య ప్రకాశుడు పలరాజు పగవాడే పనిద మోగనాగుడే పలరాజు పగవాడే పనిద మోగనాగుడే పలరాజు పగవాడే పనిద మోగనాగుడే కొలువై యున్నడే దేవదేవుడు దేవదేవుడు కొలువై యున్నడే పంకమగు చిలువల కంకణముల మదనలు వంకల మణిరుచుల వంకతనన అలు 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 పంకమగు చిలువల కంకణముల మదనలు వంకల వంక అలమేలు వంక నలమేలు కులవంక నలమేలు కులవంక నెలవంక వల చేతనొక జింక పైగరి నీరంగ కొలువై యున్నడే వల చేతనొక జింక పైగరి నీరంగ కొలువై యున్నడే దేవదేవుడు దేవదేవుడు కొలువై యున్నడే త్రిణాకుత చేతుత రేకుత కరిత్రణాచను కదికిన తొం కరిత్రణాచను కదికిన తొం కరిత్రణాచను కదికిన తొం
మేలుగరతనం పురాణు చెక్కిన ఉంగరాలు భుజగకేయూరాలు మెరయంగ మేలుగరతనం పురాణు చెక్కిన ఉంగరాలు భుజగకేయూరాలు మెరయంగ మేలుగరతనం పురాళ్ళు చెక్కిన ఉంగరాలు భుజగకేయూరాలు మెరయంగ ఆలుగారు పులితోను గట్టి మొన్న పాలు బట్టి పులితోలు గట్టి మొన్న పాలు బట్టి దేవదేవుడు దేవదేవుడు కొలువై 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 యునాడే దేవదేవుడు. बहुत 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 धन्यवाद सिस्टर हंसिका का। अभी हमारे बीच ब्रदर ब्रिजेश भाई पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर बताएंगे। आप रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिशनर है, राजयोगा मेडिटेशन ये रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और आप अभी पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर बताएंगे। ओम शांति। हम सब यहाँ पे बैठे हैं काफी समय से और आज तो बहुत अच्छा पर्व है, तो एक संकल्प कौन सा लेंगे? हम सब अपने आप को मंत्र देते हैं। तो जो मंत्र मुझे मेरे मम्मी ने दिया था, फिर स्वयं परमपिता परमात्मा ने ऐसे संकल्प दिया था, ऐसा कौन सा संकल्प आए हमारे मन में जो हम जिंदगी भर याद रख सके? तो एक संकल्प मैं बोलता हूं और छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं, जो बड़े भी हैं, सब ये गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। आज हम ऐसा संकल्प लेके जाएं कि आज के बाद हमारे पास सब सकारात्मक संकल्प ही हो, पॉजिटिव थॉट्स ही हो। तो सबसे पहला पॉजिटिव थॉट ये मैं आपको पहले ही आंसर देना चाह रहा हूं कि तन्मय मन शिव संकल्पम वस्तु। आपको और मुझे दोनों को शिव संकल्प ही आते रहे, ठीक है? अब देखते हैं हम पॉजिटिव थॉट्स इस तरह से क्रिएट करेंगे कि जहां पे हमने यहाँ पे आसपास जो भी कुछ देखा है उसके ऊपर आपको आंसर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे बच्चे भी, इज इट ओके हिंदी में बात कर रहे हैं या इंग्लिश में? हिंदी वाले हाथ उठाओ। ओके, इंग्लिश। ओके, हिंदी इंग्लिश का समावेश करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे कितने शिवलिंग है? कौन बता सकेगा? हाथ ऊपर करो। कितने कितने शिवलिंग है? 108। चलो भाई साहब के लिए ताली मारो सब। यस, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं तो हमको यहाँ पे रहना है ना। 109 विद दिस वन, वेरी गाइस, उनके लिए भी ताली मारिए। और 110 इनके साथ, 110। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कौन 5 नाम शिव के 108 नाम हैं, लेकिन 5 नाम कौन बोल सकेगा विदाउट देखे? हाथ आंख इधर उधर नहीं जानी चाहिए। भगवान के गुण है ना, तो ये गुण हमको धारण करने हैं। आज हमको ये सब लेके जाना है ना, और वो चीज याद रखेंगे तो वो चीज होगा भी। जैसे बोलो, यस एनीबडी? शिव भोलानाथ, परमपिता परमात्मा, पशुपतिनाथ, पशुओं के भी नाथ है पशुपतिनाथ, अमरनाथ, अमर आत्माओं के भी नाथ। अभी किसी ने डांस किया था, उसका कौन सा नाम है? त्रिंबकेश्वर, श्रीशैलम,
नटराज, अभी डांस किया था ना। और क्या है? भूतनाथ भी है, कैलाशपति भी है, भैरवनाथ। यस। कौन? वैद्यनाथ। यस। चलो ये तो सेकंड क्वेश्चन हो गया, आप सब अपने आप को शाबाशी दे दीजिए। थर्ड क्वेश्चन, अभी हम थोड़े, मैं ही आपको थोड़े गुण बोलूंगा, वो गुण में से आपको चूज करके आपको उसमें से 5 गुण बोलने हैं, ठीक है? और ये गुण ऐसे हैं जो परमपिता परमात्मा हमको जैसे ही सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, हमको अनुभव कराते हैं। तो वेरी सिंपल है और वैल्यू बेस्ड है। जैसे इंग्लिश में मैं पहले बोलता हूं, आप हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलिए। गॉड इज ओशन ऑफ लव, गॉड इज ओशन ऑफ पीस, गॉड इज ओशन ऑफ पावर, गॉड इज ओशन ऑफ हैप्पीनेस, गॉड इज ओशन ऑफ नॉलेज। हिंदी में कौन बोल सकेगा अभी? एक और माइक मिलेगा? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हिंदी में बोलिए। ज्ञान का सागर, स्नेह का सागर, नो प्रॉब्लम, प्रेम का सागर, शक्ति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। बहुत, भाई साहब के लिए बहुत बड़ी ताली मारी है। यस। अब हम लोग अनुभव करते हुए ये सब गुणों को याद करेंगे, ठीक है? एक बार फिर से अनुभव करें। हाँ, फिर हम और थोड़े गुण को देखेंगे। परमात्मा प्यार का सागर है, ठीक है? तो बच्चों को भी बोलना है तो बहुत प्यार से बोलना है, करेक्ट? परमात्मा शांति का सागर है। आप लोग शांति बोलते हो? कौन से? ओम शांति, ओम शांति बोलते हो? सभी एक साथ एक बार मेरे साथ बोलिए, ओम शांति, है ना? तो जितना शांति, वो शांति मेरे में भरनी चाहिए। तो अगर परमपिता परमात्मा भी शांत है तो उतना शांति हमारे मन में आनी चाहिए। फिर शक्ति का सागर, शक्ति सागर कैसे? परमपिता परमात्मा शक्ति स्वरूप है, ठीक है? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक मैंने कितने सारे वर्ड्स यूज किए? फर्स्ट वर्ड कौन सा था? जब मैं स्टेज पे आया आपको एक मंत्र दिया, कौन सा था वो? यस। मेरे को 5 ऐसे पॉइंट्स बोलिए जो आपको बहुत अच्छे लगे, जो यहां पे भी है, जो स्टेज वालों ने भी बोला। कौन से पॉइंट्स थे? मात्र शक्ति, यस। परमात्मा के गुण, यस। देखो इससे क्या हो रहा है, आपका संकल्प, आपका मन पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। नहीं तो व्यर्थ भी जा सकता, अरे और कितनी देर बैठना है, अरे कब तक चलेगा, भूख लगी है, आज व्रत लिया है, आज सारी रात जागरण कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, या कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, मुझे कोई लेने आएगा, या क्या लग रहा है? तो अब आपको मैं ऐसे संकल्प दे रहा हूं कि आपको यहाँ पे बैठे बैठे, अभी मान लीजिए आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी बैठ रहे हैं, तो आप कौन से संकल्पों से बैठ रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़े संकल्प देता हूं, फिर आप लोग उसको ऐड कीजिए, ठीक है? और ये संकल्प ऐसे रहेंगे कि ये गेम मैं चालू कर रहा हूं, लेकिन आप लोग मुझसे जीतना है। मैं ज्यादा संकल्प करूंगा, आप लोगों को उससे भी ज्यादा संकल्प करना, विन विन पे काम करेंगे। ये लीजिए, आपके पास आ जाइए। नहीं नहीं, आप दूसरों को भी दे, जरूरत पड़ेगा। थोड़ा नजदीक आ जाएंगे भाई लोग, आ जाओ, थोड़ा नजदीक आ जाओ, भाई बहने थोड़ा नजदीक आ जाओ, थोड़ा पास में आ जाओ, तो माइक देने में इजी होगा। चलो धीरे धीरे आते जाओ। तो सबसे पहले देखो, हम जब यहाँ पे बैठते हैं तो यहाँ पे हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि आज का दिन मेरा परम पिता परमात्मा के साथ जो वास कर रहा हूं, उनके साथ जो रह रहा हूं, वो मेरा संकल्प है।
हम तो रोज मम्मी के साथ बैठते हैं, डैडी के साथ बैठते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं। आज किसके साथ बैठते हैं? परम पिता परमात्मा, जो हर रिलेशन मेरे साथ है। करेक्ट? आज उनके साथ मैं बैठा हूं। और उनके साथ कैसे बैठता हूं? शांति से। शांति से उनके संकल्प मेरे में आए। कैसे आएंगे? जैसे आप बैठते हो, आपके कोई रिश्तेदार कहीं बाहर चले गए हैं, आउट ऑफ कंट्री गए हैं, जब संकल्प आता है तो याद करते हैं ना। तो जैसे याद करते हैं वैसे याद। दूसरा, हम यहां पे करते करते जैसे व्रत ले रहे हैं, हम लोगों ने सुना, प्रदर्शनी में भी देखा। तो व्रत कौन सा ले रहे हैं? कोई भी बुरा विचार ना आए, आएगा ही नहीं। ये आप संकल्प कर लो कि मैं परमपिता परमात्मा के साथ अभी बैठा हूं, जितनी देर भी बैठा हूं कोई भी बुरा विचार नहीं आएगा। जो भी कलह कलेश है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब इतना बड़ा परमात्मा बैठा है ना, कर लेगा। करेक्ट? यस। तीसरा, हमने परमपिता परमात्मा के साथ व्रत लिया है, आज हम पवित्र रहते हैं। पवित्रता सिर्फ शरीर की नहीं है, मन की भी पवित्रता। न मेरा मन इधर भटके न उधर भटके। हम अपने आप को एक पवित्र संकल्प देते रहे कि हमको यह बनना है खुद के लिए। और यही हमारा गिफ्ट रहेगा आज परमपिता परमात्मा के साथ हम जब ऐसे संकल्पों के साथ बैठते हैं तो। चौथा, अगर हम आज परमपिता परमात्मा को एक, हम लोग सब इतने सारे शिवलिंग देखे, यहाँ पे भी प्रार्थना किया, क्या हम ऐसा एक संकल्प करें कि जो परमात्मा को मैंने एक बार बोल दिया तो वो मेरा संकल्प पूरा करेगा। कौन कौन ये संकल्प करना चाहते हैं? या? सभी हाथ उठाएंगे ना कि जो भी हम संकल्प करें वो परमात्मा करे। लेकिन वो संकल्प में दृढ़ता चाहिए, संकल्प में विश्वास चाहिए। और देखो, अभी जब भी हम परमपिता परमात्मा और मंदिरों में जाते हैं तो यही विश्वास के साथ जाते हैं। और पांचवा, सबसे पहले मेरे मन में शांति, शक्ति और प्यार अपने आप यहाँ पे आती है। वातावरण ही मेरे को प्यार दिला रहा है, वातावरण ही हमको शक्ति दिला रहा है, वातावरण ही हमको शांति दिला रहा है। ठीक है? तो अभी हम लोग गेम खेल चालू करें फिर से। ओके, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना है। व्रत के ऊपर क्या बोला था मैंने? व्रत मीन्स प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस? गॉड को क्या प्रॉमिस करेंगे आज? यस, शांति से रहेंगे। चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। शांति से रहेंगे। और आज परमात्मा को क्या बोलेंगे? पढ़न नहीं आना चाहिए। ठीक है, वेरी नाइस। और कुछ? अरे ये तो संकल्प आपको करना ही है ना, कि मैं जो संकल्प करूंगा वो सिद्ध हो जाना चाहिए। करेक्ट? तो यही तो पॉजिटिव थिंकिंग का गेम है। तो जितना हम पॉजिटिव सोचते जाएंगे वो पॉजिटिव चीज होते जानी चाहिए। ठीक है? अब एक राउंड हम ऐसे खेलेंगे जैसे मैं भाई साहब को बता रहा हूं। भाई साहब आइए। तो जैसे मैं भाई साहब के साथ खेल रहा हूं, ऐसे मैं आप सब के साथ खेलूंगा। ठीक है? या मैं और भाई साहब के साथ। तो भाई साहब, मैं एक शिव के नाम बोलता हूं या गुण बोलता हूं, आपको एक शिव के गुण बोलना है। ठीक है? तो जो रुकेगा वो आउट। उसके बाद हम दोनों आप लोगों के साथ खेलेंगे। मगर आउट ऐसे वाले को गिफ्ट देना। हाँ, तो मैं पहले आउट हो हमारे जाऊंगा। पास पूरा प्रसाद है, लिटरेचर है, जो चाहिए वो ले लीजिए। आपको 1 घंटे का क्लास भी करा देंगे। थैंक यू। ओके, ठीक है। शिव के बारे में ही बोलना है, ऐसा नहीं कि शिव लक्ष्मी जी है। नहीं। ओके, शिव और शिव के गुण। ठीक है? आप सबको इसके बाद खेलना है हमारे साथ। ओके? परमपिता परमात्मा सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। क्या बोलना? वही बोलना नहीं है। नहीं नहीं, आपको दूसरा बोलना और रिपीट नहीं करना है। जो मैंने बोल दिया वो रिपीट नहीं करना है। परम पिता परमात्मा प्रेम के सागर है।
वो शक्ति के सागर है। अच्छा, इसके बाद मैं बोलना। हाँ, आप बोलते जाना। परम पिता परमात्मा प्रेम के सागर है। एक बार बोल दिया, दूसरी बार रिपीट नहीं करना। नहीं करेंगे। हाँ, वो बहुत ज्ञान का सागर है। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। नहीं नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप नहीं बोलना। वो भी आप बोले ना, अभी आपको उधर से सुन के नहीं, वो तो मेरे को हेल्प करे ना, ये तो नहीं, खाली ट्रायल गेम है। लगभग हमारे जितने हैदराबादी पैदाशी है, हाँ, सामने से कापी मारने की आदत है। कोई बात नहीं, ये कॉपी मारो आजू बाजू से, किसको भी पूछ के। ठीक है, एक काम करेंगे अभी, एक गेम, वहां वाले आप इनको हेल्प करो, यहाँ वाले हमको हेल्प करो। ठीक है, फिर इजी हो जाएगा नेक्स्ट राउंड। ओके, आप सब इनको हेल्प कर सकते हैं, आप पूछ सकते हो उनको, हमारे लिए हमारा भी स्ट्रांग पावर हो। ओके, रेडी, आर यू रेडी? ओके, भगवान दुख हरता सुख करता है। भगवान शांति देने वाला है। ओके, परमपिता परमात्मा तीनों लोकों का मालिक है। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहकर सब कुछ करता है। परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा स्थापना, पालना और विनाश करता है। अभी अभी मेरे लिए कोई मदद करेंगे? हाँ, मदद करो उनको। हाँ? परम पिता परमात्मा त्रिनेत्री है, मेरी बीवी के लिए तालियां। तो परमपिता परमात्मा भोलानाथ है। परम पिता परमात्मा शक्तिशाली है। परमपिता परमात्मा सर्वेश्वर है। परम पिता परमात्मा सर्वेश्वर। हाँ, फिर से रह जाएगा। परम धाम में रहते हैं। सर्व का मतलब हर जगह रहते हैं। अपन क्या बोलते हैं, परम धाम में रहते हैं, जब जरूरत पड़े जब भी आएंगे नई सृष्टि रचने के लिए। वो सब एक्सप्लेनेशन हो गया। अच्छा, तो सर्वेश्वर जैसे मैंने तो उधर देख के, तो हमको मैंने बोला आपको चीटिंग भी कर सकते हैं, आप इधर से भी देख सकते हो, उधर से भी देखते हो। यानी सर्वेश्वर का मतलब यह है कि सर्व, जैसे आप सब बैठे हो, सबके मन में आ सकता है ना, सब जगह वह, क्योंकि वो आत्मा को कितना एक सेकंड भी नहीं लगता है यहाँ से जाए वहां पे जाए, इसलिए। ठीक है, अभी हो गया। अभी ये तो ट्रायल राउंड था, अभी हम आप लोगों के साथ खेलें। ओके, ठीक है। मैं नीचे जाऊं क्या अभी? नहीं नहीं नहीं, आप रहिए। माइक देना ना। नो। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो अभी दो ग्रुप्स बनाते हैं, ये साइड का ग्रुप और ये साइड का ग्रुप। भाई साहब, आप उधर से, ठीक है। तो कौन सा ग्रुप खेलेगा? तो आप लोगों को एक एक वर्ड बोलना है, वो लोगों को एक वर्ड। हाँ, अगर ये लोग नहीं बोल पाए तो अपन हेल्प कर सकते हैं। और देखो, आप लोग कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे कितने सारे वर्ड्स है, वो भी यूज कर सकते हो ना। मगर गूगल से कॉपी नहीं करना है, कहीं से भी सामने कॉपी। पोस्टर्स में से करना है। हाँ, लेकिन उनका ही गूगल बाबा कभी कभी गलत भी बोल देते हैं। वो भी सही है, करेक्ट है। चलो चालू करें, आप चालू करो। अमरनाथ, अमरनाथ, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, बद्रीनाथ, श्रीशैलम, कालेश्वर, महाकालेश्वर, त्रिकालदर्शी, काशी, काशी विश्वनाथ, बाबा चंद्रेश्वर, बोला बाबा, शंभुनाथ, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, हर हर महादेव, दक्षेश्वर, दक्षेश्वर, सोमनाथ, अमरनाथ, कैलाशनाथ, वैद्यनाथ, उमाकांत, बाबा बर्फानी, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर बोला ना भाई, दो नाम बोल दिया ना। ओके, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, शंभुनाथ, दक्षेश्वर, आशुतोष महाराज, दीनानाथ, कैलाशनाथ, नीलकंठेश्वर, कमॉन कमॉन कमॉन, नटेश्वर, नकेश्वर, यस, आनंदी, आनंदी, नंदेश्वर, महाकालेश्वर, हो गया। आपका टर्न है। नटराज, अरे
मेरा नहीं है भाई, उन लोग बोल रहे तो बोल रहे हो ना बाबा। चंद्रांगनी। हाँ? सुरटी सोमनाथ। सुरटी सोमनाथ। उमाकांत। नटेश्वर। अर्धनारेश्वर। कैलाशपति। जब तक रुकेंगे नहीं तब तक चलेगा, फिर नेक्स्ट राउंड जाएंगे। हाँ। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन। श्रीशैलम अमीर। अमर आत्माओं के नाथ अमरनाथ। हम हो गया भाई। बिल्केश्वर। पशुपतिनाथ। भूतनाथ। नीलकंठ। नीलकंठ। हो गया वो भी। महाकालेश्वर। हो गया वो भी। गोपेश्वर। कहाँ है भाई, काफी मार सर्वेश्वर। रामेश्वर। चिदम्बरम। वंद्रधारी। बाबुलनाथ। चंद्रदेव। हो गया बेटा वो। त्रिनेत्रधारी। यहाँ मेरे बहना कोई भी हेल्प नहीं कर रहे, क्या बात है बाबा। जटाधारी। जटाधारी। आओ, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट मेरी बीवी है, ये बता दिया गया है, नारी शक्ति इज पावरफुल। यस। ओके चलो भाई बहन, यहाँ पे लास्ट राउंड। संगमेश्वर। सोमेश्वर। शेखर। चंद्रशेखर। विश्वेश्वर। चलो अभी आप सब एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी ताली मारो। ओके, अब ये राउंड जो है, देखो हम लोग पॉजिटिव थॉट्स कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको इतने पॉजिटिव थॉट्स करने हैं आज यहाँ पे बैठे बैठे, वो पॉजिटिव थॉट्स ही भगवान आपको तथास्तु बोलते रहे।